Hi guys, this is Saurav here and welcome to another session for 15-day sprint to JEE Main 2019, the ultimate countdown. Okay, we have been organizing a number of videos and number of high quality content so that कि भाई JEE आप चिल मार के दो, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। रीजन ये है कि ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड पार्ट, दैट इज ग्रुप स्टडी सॉल्ट एनालिसिस मेटलर्जी। बिफोर गोइंग ऑन टू दिस, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि वी हैव uploaded a number of videos in physical chemistry, organic chemistry, mathematics and physics on our video channel, and you can subscribe to that, listen to that, watch it, share with your friends so that सभी कोई आराम से आप JEE मेंस को देने जाएं without any tension, without any confusion. Okay, now before wasting any more time, I'll start with my lecture. I'm Saurav. I've done my masters from NIT Rourkela and this is my session where I'd be discussing these three parts. Now these three parts are very vast, लेकिन इसमें हम कुछ एक ही important concepts उठाएंगे. Let's देखते हैं पहले चीज कि इनका वेटेज क्या है. So अगर हम वेटेज देखें तो वेटेज पूरा क्लियर है हमारे पास. मेटलर्जी से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं यार. देखो, वन क्वेश्चन. ग्रुप स्टडी अबाउट 5 क्वेश्चंस आ गए थे. This is taking mains offline as well as online into consideration. Salt analysis, इससे भी क्वेश्चन आ गए. So if you ask me, अगर आप मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, you can skip metallurgy, but don't try to skip salt analysis. Don't try to skip group study. But याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें. Let's take up those parts जिसमें कि याद रखना बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है. Okay? Still, I'll say that NCERT would be the Bible for this part. NCERT अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं आती है. Let's move on to our first question. Our first question is really interesting. Okay, देखते हैं हमारा first question क्या है. Our first question is this: which of the following ions are precipitated as their chlorides using dilute HCl? Salt analysis, in which what we do is we dissolve a salt, analyze the cations and anions using certain reagents. Now for analysis of cations we use a number of reagents and group 1 के reagents, group 1 के cations के लिए हमारा reagent है dilute HCl. Okay, so dilute HCl is for group 1. Now what are the cations in group 1? To learn this, let's learn a very fun method. Okay, and the fun method is this. The fun method is this. देखिए, read the first statement. लड्डू is friends with silver and mercury too. लड्डू भाई साहब कौन है? लड्डू भाई साहब है हमारे lead. Pb 2+. Silver Ag+. Mercury 2 I have written purposefully because mercury appears in two places. Mercury appears in group 1 as well as group 2. In group 1 it appears as mercurous. In group 2 it appears as mercuric. Group 1 में जो mercury आता है, it is present in this form. अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 लग गया. That is the reason I have written 2. So in group 1 it is present as mercurous. This is known as mercurous. मर्क्यूरिक अगर होगा तो सिर्फ Hg2+ लगा रहेगा, नीचे 2 नहीं लिखेंगे हम. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट. दे मेड वाइट मनी बाय सेलिंग HCl. दे मेड वाइट मनी. वाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनके प्रेसिपिटेट का कलर. एंड दिस इज द ग्रुप रिएजेंट. ओके, दिस इज द ग्रुप रिएजेंट. So it's very easy. Laddu is friends with silver and mercury too. So laddu, lead, mercury 2 is Hg2 2+. Silver Ag+. They made white money. White का मतलब precipitate का color. HCl group reagent. खत्म. Easy है. Let's go back to our question. Our question was this: which of the following ions are precipitated as the chlorides using dilute HCl? All of them in group 1 are precipitated as chlorides.
ग्रुप 1 में कौन सा प्रेजेंट रहेगा बताइए? लेड 2 प्लस Ag प्लस Hg2 2 प्लस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट सर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इजी, फर्स्ट ऑप्शन हो गया भाई हमारा, बाकी सबको देखना ही नहीं है, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, precipitate of which color isn't obtained when cations of group 2A and group 2B are precipitated as sulfides? Now group 2A के cations और group 2B के cations के numbers बहुत ज़्यादा हैं, 4 से ज़्यादा cations हैं यहाँ पे, and इनके लिए जो group reagent होता है that is dilute HCl plus H2S। अब इन group reagents को हम add करते हैं तो ये cations सल्फाइड के फॉर्म में precipitate करेंगे, सल्फाइड के फॉर्म में, इसको आपको याद रखना है। They will precipitate in the form of sulfides. If they are precipitating as the form of sulfides, what is their respective color? ना इतने सारे कलर्स आप याद कैसे रखोगे, मैं बता देता हूं, मेथड बहुत इजी है। लेट्स मूव ऑन, देखते हैं क्या होगा मेथड। मेथड ये है, 4-5 स्टेटमेंट है, इन 4-5 स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए और अपने स्टडी डेस्क के पास लगा लीजिए। These 4-5 statements are enough। कलर से ही आजकल जेईई मेंस पे क्वेश्चन निकल जा रहे हैं। ओके, सो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लड्डू भाई क्यू कार्ड्स होगा। लड्डू कहां से आया भाई, किसके लिए लिखा हमने? लड्डू हैज बीन रिटन फॉर Pb2 प्लस। भाई I have highlighted the important alphabets Bi, that means Bi बिस्मथ 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है। Q Cu 2 प्लस, Cd 2 प्लस, नथिंग इज मेंशन, 2 प्लस में सब लोग रहेंगे। Hg ये हो गया आपका Hg2 प्लस, दैट मीन्स मर्क्यूरिक। प्रीवियस केस में हमने देखा था मर्क्यूरस। सो हमारे पास हो गए फर्स्ट स्टेटमेंट से Pb2 प्लस, Bi3 प्लस, Cu2 प्लस, Cd2 प्लस, Hg2 प्लस। क्लियर? लड्डू भाई क्यू कार्ड्स होगा। ओके, नाउ ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन ग्रुप 2A। ओके, ग्रुप 2B में कौन प्रेजेंट रहता है, उसके लिए सेकंड स्टेटमेंट है। ओके, सनी वेटेड फ्रॉम 2 to 4 बट असलम एंड शब्बीर केम बिटवीन 3 to 5। सनी भाई सब कौन है? सन्नी पाजी कौन है भाई? सन्नी पाजी है हमारे टिन, जिनके ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहते हैं। टिन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 2B इन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 एंड +4। सो टिन के लिए हम लिख दे सकते हैं SN2 प्लस, SN4 प्लस। असलम भाई प्रेजेंट है ग्रुप 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड असलम भाई +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट है। क्यों? यहां पे मैंने 3 and 5 लिख दिया। ऑल्सो देयर इज SB। SB रिप्रेजेंट्स एंटीमनी। Antimony is also present in +3. Antimony is present in +5. हो गया? All of these are present in group 2B। हो गया? Easy है। ग्रुप 2A याद हो गया, ग्रुप 2B याद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम याद कर लेते हैं उनके कलर्स, देखते हैं उसके बाद क्या स्टेटमेंट है। ऑल ऑफ देम एट रॉटन एक्स। रॉटन एक्स किसके लिए लिखा जाता है? H2S, एवरीबडी नोज। H2S प्लस HCl हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये आपका ग्रुप रिएजेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, असलम एंड कार्ड्स टर्न्ड येलो। असलम किसके लिए लिखा गया था? AS3 प्लस, और असलम इज रिटन फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक इज प्रेजेंट इन +3 and +5 oxidation state. Cards was written for cadmium. So aslam, that is AS3 plus as well as AS +5. Cards cadmium 2 plus turned yellow. So that means aslam sulfide
not aslam sulfide, arsenic sulfide in +5 oxidation state and +3 oxidation state, both will be yellow in color. Cadmium sulfide would also be yellow in color. Okay, next, sunny turned yellow, sunny turned brown too. मैंने brown टू इसलिए लिखा है क्योंकि सनी पाजी हमारे दो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. एक ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, एक ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल कन्वर्ट टू येलो. सो Sn+4 विल बिकम येलो एंड ब्राउन 2 मैंने 2 इसलिए लिख दिया क्योंकि ये Sn2+ के लिए कलर है ये. ओके, नेक्स्ट, क्यों लड्डू हो गया ब्लैक? क्वेश्चन मार्क लगा देना चाहिए यहां पे. क्यों लड्डू हो गया ब्लैक? क्यों किसके लिए लिखा गया था? कॉपर, लड्डू, लेड, Hg, मर्क्यूरी, मर्क्यूरिक, ब्लैक. इसका मतलब Cu2+, Pb2+, Hg2+, इन सारे कंपाउंड के इन सारे आयॉन्स के सल्फाइड ब्लैक कलर के होंगे. ओके, ऑल ऑफ दीज आयॉन्स हैव ब्लैक कलर्ड सल्फाइड्स. लास्ट वन इज शब्बीर, कंप्लीटली टर्न्ड ऑरेंज. शब्बीर भाई साहब किसके लिए था? SB. Why I have written completely? Because it will include +3 as well as +5. इनका कलर क्या रहेगा? ऑरेंज. सो हमारे पास कौन कौन से कलर्स है? वी हैव येलो, वी हैव ब्राउन, वी हैव ब्लैक एंड वी हैव ऑरेंज. लेट्स लुक एट व्हाट वाज द क्वेश्चन. इज दिस क्लियर? ओके, इसको आप लिख लीजिए. लेट्स लुक एट व्हाट वाज द क्वेश्चन. प्रेसिपिटेट ऑफ विच कलर, precipitate of which color isn't obtained when cations of group 2A and group 2B are precipitated as sulfides? येलो प्रेजेंट रहता है, ब्लैक प्रेजेंट रहता है, ऑरेंज प्रेजेंट रहता है, क्या ब्लू रहता है? नहीं. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू. कॉमन कंफ्यूजन ये रहता है क्योंकि कॉपर का जो कॉपर के सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली ब्लू कलर के होते हैं, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि कॉपर सल्फाइड भी हमारा ब्लू कलर का होगा, लेकिन ब्लू नहीं होता है. इट इज black. Okay, very easy method, very fun method. Let's move on to the next question. Next question is, among the following acid radicals, which are identified or confirmed using dilute H2SO4. dilute H2SO4 बहुत मुश्किल है बताना. अगर आपको मालूम नहीं है ट्रिक तो बताना मुश्किल हो जाएगा. कि डाइल्यूट H2SO4 का पंगा क्या है. हम डाइल्यूट H2SO4 क्यों लिखा है, मैंने डाइल्यूट HCl क्यों नहीं लिखा? देखिए, ये सारे एसिड रेडिकल्स हैं. ऑल ऑफ दीज आर एसिड रेडिकल्स, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ऑल ऑफ दीज आर एसिड रेडिकल्स एंड एसिड रेडिकल्स आर आइडेंटिफाइड बाय और सेपरेटेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज द डाइल्यूट HCl ग्रुप, डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप. डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप में हम लोग कुछ रेडिकल्स को रखते हैं. कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप में हम लोग कुछ रेडिकल्स को रखते हैं, एंड कुछ रेडिकल्स ऐसे रहते हैं फॉर विच वी परफॉर्म इंडिविजुअल टेस्ट्स. ओके, सो इट्स अ वेरी इजी वे टू लर्न. सो आई विल राइट dilute H2SO4 group, concentrated H2SO4 group. Remember this, dilute H2SO4 group will contain all those ions, all those common ions which are conjugate bases of weak acids, generally conjugate bases of weak acids. For example, carbonate, sulfide. You can take nitrite क्योंकि nitrite is produced from HNO2. Let's take some other ones. We will have acetate. We can have sulfide.
Okay, concentrated acid group will contain those which need to be dehydrated or need to be oxidized or are conjugate bases of strong acids. For example, conjugate bases of strong acids. We take chloride, bromide, iodide, nitrate, oxalate. ओके, ये सारे हो जाएंगे कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में. कुछ रेडिकल्स ऐसे हैं फॉर विच वी परफॉर्म इंडिविजुअल टेस्ट्स इवन दो दे आर conjugate bases of weak acids, conjugate bases of strong acids, still we perform individual tests for them क्योंकि ये सारे उनके लिए applicable नहीं होते हैं. And those are, I'll circle them, fluoride, all borates, sulfate and phosphate. So अगर क्वेश्चन में दिया गया है dilute H2SO4, so if it is dilute H2SO4, which ions do I have to count? 1, 2, 3, 4, 5. Answer should be 5. ऑप्शन क्या दिया गया था? 15, 5, 16, 6. यार आदमी पागल हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चन देख के लोग छोड़ देते हैं क्वेश्चन. बट रिमेंबर दिस सेगमेंटेशन. ओके, dilute H2SO4 में हम लोग कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट, सल्फाइड रख देते हैं. Concentrated H2SO4, chloride, bromide, iodide, nitrate, oxalate. Individual test, sulfate, fluoride, borates, phosphate. खत्म. ये सारे आपके एसिड रेडिकल्स यहीं पे खत्म हो गए. In last year, I guess last to last year's paper, there was a question that a sodium salt of an organic acid is being treated with dilute H2SO4 and concentrated H2SO4 and some other points were also given. One of the option was sodium oxalate. एक ऑप्शन था सोडियम बेंजोएट, वन वाज सोडियम एसीटेट. लेकिन जैसे ही वो कंसंट्रेटेड H2SO4 आप पढ़ोगे आपको ऑक्सलेट दिख गया, आपने सीधा ऑक्सलेट मारा. आंसर इज ऑक्सलेट. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे. लेकिन आधे लोगों को लगता है कि भाई इसको रिएक्शन को मुझे याद रखना पड़ेगा. नो, यू डू नॉट हैव टू, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस सेगमेंटेशन. ओके, लेट्स मूव अहेड. Next question is, which combination of the statements about the following reaction is correct? And the reaction is ammonium dichromate का decomposition. Okay? Ammonium dichromate का आपने decomposition कराया, क्या products मिलेंगे ये हमें बताना है. इस question को करने से पहले एक छोटा सा concept समझते हैं. Concept is that you must be observing a number of questions coming these years, some past few years में question आते हैं कि इस ammonium compound को reduce decompose किया तो हमें क्या मिलना चाहिए. For example, NH4NO2 इसको हीट कर दिए, क्या मिलना चाहिए. Let's take some other compounds. NH4NO3, NH4Cl, NH4ClO3, NH4SO4 whole twice. Okay, ammonium carbonate. Method क्या है? The method is very simple. Remove water, whatever is left out is your product. Remove water. Okay, what is left out? N2. Remove water. कितना water निकाल सकते हो इससे? 2 moles of water. What is left out? N2. एक ऑक्सीजन बच गया है, वो ऑक्सीजन भी लगा दो, हो गया N2O. NH4Cl looks like NH4Cl is a salt which could be produced or which can be imagined to be produced from the reaction of ammonium hydroxide and HCl. एक acid base reaction का है. एक acid base reaction से जो salt बनता है, इसमें होता क्या है कि हमारे पास जैसे इसको हीट करेंगे it will give away NH3 plus HCl. The same will happen over here. NH3 plus HClO3. Ammonium sulfate, NH3 plus H2SO4. Ammonium carbonate,
NH3 plus H2O plus CO2. Let's look at what this reaction has to offer. अमोनियम डाइक्रोमेट आपने हीट किया, Cr2O3 निकाल दिया आपने, वाटर निकाल दिया. What is left out? What is left out? Water is 4,2 हाइड्रोजन 4,2 आपने रख दिया है, ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है. So this gas, what is the entity left out? N2. The entity left out is N2. If the entity left out is N2, let's analyze the other statements. It's an intramolecular redox reaction. Intramolecular क्या होगा? Intramolecular will be within the molecule redox has happened. So ये अमोनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -3 था, this has become 0 over here. Chromium which was chromium which was +6 has become +3 over here. So redox reaction हो गया within the molecule. So ये statement correct है. Next, it is a disproportionation reaction. Disproportionation का मतलब क्या होता है? Single element undergoes oxidation and reduction. Single element undergoes oxidation and reduction. But क्या single element oxidation reduction हो रहा है? नहीं, तो ये गलत. Chromium is reduced, +6 changes to +3. +6 changes to +3, chromium reduce हो गया, ये भी correct. The reaction evolves nitrogen gas, वो तो correct ही है. The reaction leaves a green residue, Cr2O3, chromium in +3 oxidation state. +3 oxidation state में जब भी chromium रहता है वो ग्रीन कलर का होता है. ये हमने salt analysis में भी देखा है, ग्रुप 3 के radicals में CrOH3 बनता है, ग्रीन कलर का होता है. So this is correct. So हमारे correct statements क्या हो गए? 1, 3, 4, 5. So option हो गया हमारा D. Straight forward, बिना किसी झंझट के क्वेश्चन बन गया. Let's move on to the next question. Okay, so next question है, a colorless solid A liberates brown gas on acidification. हम पहले लिख लेते हैं एक एक करके रिएक्शन क्या क्या हो रहे हैं. A colorless solid A liberates brown gas upon acidification. H plus डालना हमने, so I'll get brown gas. Upon reaction with NaOH, upon reaction with NaOH, देखिए a colorless alkaline gas C on reaction with NaOH. Alkaline gas ऑप्शंस जो दिए हुए उसी से आप बता सकते हो कि alkaline gas क्या हो सकता है. Alkaline gas अमोनिया हो सकता है. So this alkaline gas is very easily अमोनिया. इसका मतलब हमारा जो कंपाउंड होना चाहिए वो अमोनियम आयन होना चाहिए. PH4NO3 एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये होगा नहीं. ओके, PH4+ एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है. PH4+ फॉर्मेशन इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द लोन पेयर ऑन द phosphorus atom is present in a s orbital or an orbital which has got 100%, almost 100% s character. So its tendency to act as a base is very less. ये concept हमने chemical bonding के video lecture में discuss किया है. Please review that. So alkaline gas C is liberated which is ammonia और आपने इसको heat किया तो non-reactive gas D is obtained. Non-reactive gas क्या होता है बताओ? कोई भी अमोनियम, आप ये जो कंपाउंड्स आपने लिए हैं इन दो कंपाउंड्स में नॉन रिएक्टिव गैस कौन सा हो सकता है? नाइट्रोजन. सो हमारे पास NH4NO2 एंड NH4NO3 में वाटर को हटा देने के बाद आफ्टर रिमूविंग वाटर व्हाट इज लेफ्ट आउट? N2O in case of N2 in case. So what should be our compound? NH4NO2. Okay, so this gave the clue that we should have a compound which should have an ammonium unit. Brown gas, how do we identify that brown gas is obtained? It's a very simple process. If you take NH4NO2 and react it with, let's say HCl, so what will happen? You'll get NH4Cl plus HNO2. Okay, this HNO2 decomposes to form NO gas, half oxygen,
or you can say, better to write, nascent oxygen is obtained and H2O is obtained. These two, the moment NO is obtained, NO and O combine to form NO2. This is a very important detection test for nitrite radical as well. Nitrite radical I discussed earlier is present in dilute H2SO4 group. So when you take a nitrite salt as dilute H2SO4, HNO2 is formed, which if you like heat the test tube, HNO2 would disintegrate and some vapors will be given out. At the mouth of the test tube, aerial oxidation takes place. So liberation बहुत rapidly brown gas का नहीं होता है, mouth of the test tube पे जाके brown gas थोड़ा ज़्यादा बन जाता है. Okay, so this is what NO2 is brown. This is brown. So let's analyze the statements. Compound is NH4NO2, which is correct. Compound is NH4NO3. No. Compound is this. No. Smell like rotten fish. Rotten fish just smell hai, that is for pH 3. But no, pH 3 is not obtained. Wrong. The gas D is paramagnetic. D gas is paramagnetic. No. D gas is paramagnetic. Nahin. D gas is diamagnetic. N2 ka molecular orbital configuration, if I'm writing, it will be diamagnetic. All electrons will be paired. Bond order 2.5. Nahi. D is diamagnetic. Correct. Bond order is 3. Correct. Because N2 molecule is तरह का रहता है. So हमारे correct statements कितने हो गए? 1, 2, 3. What has been asked? How many statements are correct? So our correct answer is B. How much time did it take to solve this question? About 2 minutes. 2 minutes में आपका question solve हो गया. अगर आप बहुत जल्दी reaction लिखते हैं, you can solve it within 2 minutes time or under 2 minutes time. But this question is not difficult. Don't try to analyze the reactions in inorganic chemistry. Most of them are very, very simple. Few of them are very complicated. जो complicated उसको छोड़ दो, कम से कम simple तो पढ़ लो. Okay? Let's move on to the next question. Okay? So next question is, when H2O2 is added to dichromate in acidic medium, a deep blue compound is formed. This is a very simple question. However, it is a very tricky one as well, because H2O2 is an oxidizing agent and potassium dichromate is also an oxidizing agent. दो oxidizing agent को मिलाया हमने, किसका oxidation होगा ये हमें बताना है. जनरली हमें देख के लगता है कि डाइक्रोमेट का हो जाना चाहिए, लेकिन डाइक्रोमेट का नहीं होगा, बिकॉज क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्रोमियम विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन. सो Cr2O7, दिस इज अ very, very common reaction which has always been a favorite of JEE. This question or this reaction is a favorite reaction. Dichromate H2O2 H+. Okay, ये क्वेश्चन काफी बार बहुत डिफरेंट तरीके से पूछा गया है. ब्लू कलर्ड कंपाउंड इज द की. क्रोमियम के जितने कंपाउंड्स होते हैं जनरली ऑरेंज कलर के या फिर ग्रीन कलर के आपने देखे हैं. डाइक्रोमेट इज ऑरेंज, Cr3+ इज ग्रीन. लेकिन ब्लू कलर का एक कंपाउंड होता है जो कि बहुत ही रेयर है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कंपाउंड है. उसका बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है. रिंग अ बेल? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है. किसका याद होगा आपको? CrO5. ये क्वेश्चन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत जगह देखा होगा. बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम एल्जेब्रिक मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो +10 आता है, लेकिन +10 होता नहीं है. द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस एंटिटी इज +6 बिकॉज बॉन्ड्स आर लाइक दिस. CrO this is CrO5. Okay, oxidation state of chromium is +6. Oxidation state of chromium in Cr2O7 is also +6, so it means chromium is not undergoing oxidation. Oxygen insertion, however, takes place. This is peroxide part. This is the peroxide part.
and this one is what? This one is the oxide part. If this is the oxide part, let's look at the options. The colored compound produced is chromium oxide peroxide. The colored compound produced is chromium oxide. भाई दोनों में से कोई एक ही नाम करेक्ट होगा, ये गलत है, ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज भी प्रेजेंट है, ऑक्साइड लिंकेज भी प्रेजेंट, इसका नाम होता है chromium oxide peroxide. When this compound rapidly decomposes in aqueous medium, ये ब्लू कलर जो होता है वो पानी में डालते ही बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट करता है, and when it undergoes disintegration it produces Cr3+, okay, and इसके साथ ही साथ ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, okay, it produces Cr3+ and oxygen. Now what is the color of Cr3+? ये पहले भी हमने देख लिया, Cr3+ का कलर ग्रीन. सो आपके सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? यू टेक अ ब्लू कलर्ड कंपाउंड, एड वाटर, ग्रीन हो गया. ब्यूटिफुल कलर चेंज, ब्लू चेंजेस टू ग्रीन, ब्लू चेंजेस टू ग्रीन एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन आउट. सो हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? कलर्ड कंपाउंड इज chromium oxide peroxide, correct. Colored compound disintegrates in water to produce green color solution, which is also correct. Colored compound disintegrates in water to produce O2 gas, which is also correct. So हमारे correct answers हो गए A, C, D. Option क्या होना चाहिए? This is correct. Okay, so this is a very simple part. Dichromate के कुछ reactions में ये one of the reactions which is favorite of JEE, and ये question पूछा जा सकता है. This is a probable question. अब इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा. ओके, प्लीज रिव्यू द लेक्चर, आराम से आपको समझ में आ जाएगा. बहुत सिंपल रिएक्शन है एंड की एरिया इज CrO5 बिकॉज इट इज द ओनली Cr compound that you have in your syllabus which is blue in color. Okay, let's move on to the next question. Which of the following statement is incorrect? And this question is from xenon group 18. xenon के फ्लोराइड्स का हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है IIT JEE मेंस एज वेल एज एडवांस्ड के लिए. और xenon के फ्लोराइड्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ना और याद रखना, इट्स वेरी इजी. There is a small bit of concept which is involved and let's learn what is it. Okay, so xenon forms XeF2, XeF4, XeF6. Somebody might say that XeF8 भी बन सकता है in +8 oxidation state, but this is not stable. This is not stable because +8 oxidation state, fluorine, a lot of steric crowding takes place, it becomes highly unstable. Okay, so these three are the stable fluorides which are formed. If I want to identify xenon, what would be the oxides formed? Xenon can be expected, since it is forming compound in +2, +4, +6, so I can expect it to form XeO, XeO2, XeO3, XeO4. हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक्सपेक्टेशन करने में क्या दिक्कत है यार? एक्सपेक्ट कर लो, एक्सपेक्ट कर लेंगे, लेकिन होगा नहीं. पॉइंट ये है, experimentally it has been identified that of all these oxides, this does not exist, this does not exist, this does not exist, only this exists. Of all these oxides, only one exists, that is XeO3. What is the reason for that? First reason, XeO, XeO2. Okay, now the reason why this is not happening is because in this Xe2+ needs to be formed, in this Xe+4 needs to be formed, and oxygen is not that very electronegative that it will be inducing a good +2 amount of charge or +4 amount of charge. It cannot end up oxidizing it. It cannot end up oxidizing it. Another reason for this is that if you are using these
oxidized species and reacting it with oxygen, the bond energy is not sufficient for to compensate for the formation में जितना energy गया है. Okay. What about XeO4? If you try to form XeO4, it will be like this, sp3 hybridized. If it is sp3 hybridized, in my chemical bonding lecture, if you refer, if it is sp3 hybridized, the rest 4 pi bonds should be formed using only d orbitals. Using only d orbitals because no p orbitals is involved, is available for forming pi bonds. Is this clear? इतना तो हमें मालूम है. ये पाई बॉन्ड्स हमारे डी ऑर्बिटल यूज करके बनेंगे. कितने डी ऑर्बिटल्स हमारे पास? 5 डी ऑर्बिटल. ये 5 डी ऑर्बिटल हैं, dxy, dxz, dyz, dx square minus y square, dz square. Experimentally, it has been identified that the pi or bonds can be formed by only 3 types of d orbitals, that is dxy, dxz and dyz. Okay, so 4th pi bond cannot be formed quite easily, and the 4th pi bond would be weak, and because of that this will not exist. Clear? So this will exist and these 3 will exist. Let's look at what is the concept involved in, for how do we use this in identifying this result. Okay. Sorry. So करना क्या है? XeF2 दिया गया है. You treat it with water. You remove all fluorine. You remove all fluorine. 2HF. Fluorine forms a single bond. So if you remove 2 fluorine to compensate for 2 bonds which have been lost, you need to form a XeO molecule. But XeO molecule is not stable, so it will disintegrate to form xenon and oxygen. So XeF2 upon hydrolysis produces xenon, HF and O2 because this is not stable. Okay, so this statement is correct. Next, XeF6 upon hydrolysis. XeF6 is interesting because XeF6 में हमारे पास 6 fluorine units हैं. So I write XeF6. Okay, I react it with how many oxygen bonds can I form? I can form Xe double bond O, double bond O, double bond O, because 6 fluorines have to be removed, so 6 bonds बनाना पड़ेगा, and this compound exists. HF बन सकता है. So XeF6 upon hydrolysis with 3 moles of water produces HF and XeO3, which is correct, which is very correct. ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है. नेक्स्ट, XeF4 upon hydrolysis produces, इसमें और एक चीज समझ लेते हैं, इस पे जाने से पहले और एक चीज समझ लेते हैं. If you perform partial hydrolysis, then you will get oxyfluorides. How do you get oxyfluorides? XeF6 reacts with H2O. Only one. So if one oxygen comes in, 2 fluorine have to go out. You'll get XeOF4 plus 2HF. If you react XeF6 with 2H2O, if 2 oxygen come in, 4 fluorine have to go out. Xe double bond O, double bond O, fluorine, XeO2F2 बन जाएगा, एंड आपके पास कितने हो जाएंगे? 4HF, और 3 का तो मैंने लिख ही दिया. सो आपको अगर पूछा गया XeF6 is made to react with water, what can be the possible products obtained? So possible products will be HF, XeO3,
XeO F4, XeO2 F2. Clear? Let's look at the C option. So the C option. C option is XeF4 upon hydrolysis produces HFO2 XeO4. इसका concept बहुत simple है. Xe plus 4. If you're trying to perform a reaction, hydrolysis reaction, you would want to form XeO2 by removing 4 fluorine, but XeO2 does not exist because in plus 4 oxidation state. Okay, XeO2 does not exist plus 4 oxidation state. What exists? XeF4 can be said to be intermediate of XeF2 and XeF6. So this is an intermediate oxidation state, and since this is an intermediate oxidation state, this will form products due to this, products due to this as well. So ये shortcut है. Okay, this is a shortcut ये है कि XeF4 में +4 ऑक्सीडेशन है, से +4 ऑक्सीडेशन का ऑक्साइड आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप क्या करो कि ये XeF2 और XeF6 के बीच में आ रहा है. सिंस बीच में आ रहा है तो XeF2 के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स लिख देते हैं और XeF6 के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स लिख देते हैं. तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स अगर इसके लिखेंगे हम तो हो जाएगा हमारा XeO3 plus 6HF. For this I'll write Xe plus O2 plus HF. Okay, so our product for the hydrolysis of this should be xenon, oxygen, HF, XeO3. What is given in the option? Xe, HF, xenon, HF, O2 and XeO4, which is wrong. XeO4 तो मैंने प्रूव कर दिया कि वो नहीं बन सकता है. Okay, तो ये करेक्ट है. Xenon is most soluble in water among noble gases. Yes, it is correct. This is our xenon. ये H2O molecule है. This is delta minus. Because of this delta minus, some partial polarization takes place. This plus, minus, and some attractive interaction will be there. Because xenon is largest, this polarization can take place easily, and because of that the attraction would be maximum, and so solubility would be maximum. Dipole, induced dipole. This dipole is inducing the dipole. Okay, very easy question, but मेथड थोड़ा सा लंबा है, आप इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर डिस्कशन टुडे. The last question for our discussion is this: which of the following statements is incorrect? Mond's process and Van Arkel method are similar. Mond's process and Van Arkel method have been asked multiple times. That's the reason I have taken this question. Mond's process is known as vapor phase. It's a part of vapor phase refining, and Van Arkel method is also vapor phase refining. In vapor phase refining, what we do is we take a metal, treat it with a gas. If it is zirconium, treat it with I2. If it is nickel, treat it with carbon monoxide. Change it to Z zirconium. Change it to ZrI4. Change it to NiCO4. Disintegrate this to form metal. Disintegrate this to form zirconium. The first one is known as Van Arkel method. Second one is Mond's. This one is Van Arkel method. Okay, first one is Van Arkel, second one is Mond's. Mond's process and Van Arkel methods are similar.
देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं. So what we do is we take a metal, react with the substance, turn it into a vapor, disintegrate the vapor. Okay. Mond's process Van Arkel method are similar, which is correct. Mond's process and Van Arkel method are known as vapor phase refining, which is also correct. Third, Mond's process can be used for refining of both zirconium and nickel. Nahi. Mond's process only for nickel. Van Arkel method is used only for refining of zirconium, which is correct. Okay? So, with this, we end today's discussion. I hope you have enjoyed today's session. You have understood a few concepts related to decomposition of nitrogen compounds, hydrolysis of xenon compounds, how to learn group 1 reagents and color of their precipitates, group 2 reagents and color of their precipitates. And if you have liked this video, please hit like, share the video so that your friends can learn from this. People who are not able to get quality education can also learn from this. And please do subscribe to our channel so that you are up to date with the best academic content that is available on YouTube. Okay, this is Saurav Goswami signing off, and I wish you all the very best for your JEE Mains 2019. Thank you. Thanks a lot, guys.